So what we said yesterday, that we will study ladder diagram. So what is ladder diagram and how uh, it has to be planned, why it is so important, all we will discuss here. 1 minute. हाँ करो दिन हाँ करो दिन So in the ladder diagram, first we have to understand why we need this ladder diagram. So basically in CPU, what we studied is we have an input and output. We have already defined what are those input and outputs, and this is input, which are basically sensors, and these are outputs. So I have output, and then I have input, and this is by CPU of PLC as we discussed yesterday. Now this PLC needs to be programmed. And what are the methods of programming? So there are basically four type of programming commonly used in PLC. So what are those? Number one called FBD. Number two called ladder. Number three is structured text, and number four is sequential logic. These are the four programming methods which are generally used to program the CPU in PLC. Okay, and the most very common and very popular method is a ladder diagram. So that's what we will study here. What is ladder diagram? So we will now study because we are mainly focused on ladder diagram, so we want to study that. Okay, so better if I write in this way, easier for me. That's what we are going to study. Okay. So when I say ladder, you know the meaning of ladder. What is ladder? You know, right? So ladder means something you climb on. You know. हिंदी में क्या कहते हैं इसको सीढ़ी कहते हैं ना ladder. So you basically climb on something. So अब इसका बनाने का एक तरीका है. As you can see, this is what यानी ये आपका PLC है. This is your PLC. This has input. ये डीसी सप्लाई है, ये सीपीयू है, डिस्प्ले है आपका, एंड इसके अंदर सीपीयू है, एंड ये चार आउटपुट रिले कनेक्टेड है यहाँ पर. टिपिकल डायग्राम ऑफ पीएलसी, राइट. अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे उसमें इस तरीके का डायग्राम आएगा. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, द वन विच आई सर्कल नाउ, इसको कहते हैं लैडर डायग्राम. तो ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा, इट विल बी डिस्प्लेड हियर. और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू एवरीथिंग यू विल कम टू नो. कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है, that all you will come to know. So that is what we have to learn. So let us see कि ये बनता कैसे है. सबसे पहले इसमें दो पावर लाइंस होती हैं. ये जो दो लाइंस दो एंड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कहलाती है पावर लाइंस.
So these two are known as these two are known as this and this are known as पावर लाइन्स. इसको हम कहते हैं पावर लाइन. अच्छा, उसके बाद कुछ कनेक्शंस होते हैं इसके बीच में. लेट्स से ये कॉन्टैक्टर हियर और यहाँ से ये कनेक्ट हुआ. सो इस तरीके की कई लाइंस हो सकती हैं. देयर कुड बी सो मेनी लाइंस इन बिटवीन. So these lines basically, this and this, these are called rung. Okay, these are called rung. यहाँ पर इससे इनपुट कनेक्ट होता है. यहाँ पर इनपुट आएगा. जो सेंसर्स हैं, जो इनपुट है आपका सीपीयू का, that will be connected on this power lines, and here you know output will be connected on these power lines. So this is the basically technical terms which you should know, that when you see the diagram then you should know power line किसको कहते हैं, run किसको कहते हैं, input कहाँ connect होता है, output कहाँ connect होता है, right? So if you see now this diagram, so now you'll understand this, that what is this diagram. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? I think it is very straightforward. Yes, sir. अब इसमें फर्ज कीजिए कि कई कनेक्शन है. जैसे इसमें दिया हुआ है दो पावर लाइंस के बीच में तीन रंग हैं, यानी 3 लाइंस आर कनेक्टेड. सो व्हाट आर दोस 3 लाइंस? दिस इज 1 2 3 लाइंस. देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस? ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा? फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट एंड वेयर इट विल गो. तो सबसे पहले तो प्रोग्राम, ये जो एरोस बना हुआ है, दिस एरो, so this shows the direction of the program. So program will start executing from this direction. पहले रंग में इनपुट से आउटपुट पर जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये सेकेंड रंग पे आएगा. सो देन अगेन इट विल कंप्लीट दिस ब्रांच. देन इट विल कम टू थर्ड रंग एंड देन इट विल कंप्लीट दिस ब्रांच. So the path of the execution sequence will be, first it will go from input to output, and then it will come from up to down, like here. So that is how you program. For example, अगर आप sequence of events प्लान कर रहे हैं, then you have to write your program in ladder diagram in such a way कि आप ऊपर उसी को लिखेंगे जो आप पहले चाहते हैं, एंड देन अगला स्टेप क्या होगा, वो दूसरे रंग में लिखेंगे, तीसरे रंग में लिखेंगे, एंड दैट इज हाउ यू डू. ओके, सो दैट इज द हाउ यू इट इज कनेक्टेड. अच्छा जी, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं. क्या प्रॉपर्टीज हैं जी? प्रॉपर्टीज ये हैं कि यहाँ जब आप इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन दीज टू पावर लाइंस, so input can be connected either in series or in parallel. किसी एक रंग में, on one of the line that is called rung, input can be connected either in series or in parallel. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर ये जब इनपुट से जाएगा तो इनपुट से आउटपुट की तरफ, तो ये रंग 1 एंड रंग 2 फिर इसकी इस तरह होगा, इनपुट से आउटपुट लेगा, ये किस तरह होगा समझ नहीं आया मुझे. Okay, so I'll explain. So once the program is started, then it will go from this power line 1, that is जहाँ रंग 1 लिखा हुआ है, मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ. And again show this.
So let me redraw this. Yeah. So what I'm saying is you have this power lines और यहाँ पर ये rung 1 है, let's say R1, and you have some connection here, something like this. Then you have R2, then you have some connection, like this, and then you have R3, so you have another connection, let's say only one here. These are power lines. So this is input and this is output. So what will happen, जैसे ही आप प्रोग्राम शुरू करेंगे तो प्रोग्राम की डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम. सबसे पहले ये इस रंग में जो कनेक्शन आपने शो किया हुआ है रंग 1 में R1 में, ये कॉन्टेक्टर ओपन है, ये क्लोज है, ये पुश बटन है, ये आउटपुट पे क्या लगा हुआ है, डिपेंड्स ऑन जो भी इस पर लॉजिक आपने डिसाइड किया है कि ये कब ओपन होगा, ये कब क्लोज होगा, फिर क्या होगा, मोटर ऑन होगी, वट एवर लॉजिक यू हैव डिजाइन, ये यहाँ पर पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा. After getting execution of R1, now the next sequence will be from here, it will come to R2. इसका आउटपुट दे देगा, देन R2 will start execution. फिर execution ये होगा. R2 में जो भी आपने लॉजिक डिजाइन किया हुआ है, this will executed and this will give corresponding output here. Okay. Once this is done, then it will come to R3 and then now R3 में जो आपने लॉजिक डिफाइन किया हुआ है, इस लॉजिक के हिसाब से it will start operating and it will give the output. So the point is that what sequence your program will follow. जैसे आप सी में प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो जो कमांड आपको पहले देना होता है उसको आप पहले लिखते हैं, राइट, वो आप टेक्स्ट में लिखते हैं. यहाँ पर क्या है, लैडर डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जो चीज आपको पहले करनी है वो R1 रंग में आप लिखेंगे. जब R1 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका आउटपुट आ जाएगा, देन R2 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. जब R2 का पूरा हो जाएगा देन R3 will start executing. So that is how it will work. So it will go from input to output and from top to bottom. Okay. Is this clear? Yes sir, हो गया. Okay. So this is how this will be the sequence of event. Now on the input terminals, input can be connected in series or parallel. There can be so many inputs. कुछ सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. बट आउटपुट, यहाँ पे जो आउटपुट कनेक्ट होगा, इट हैज टू बी इन पैरेलल ओनली. It has to be in parallel only. Output सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा in one of the rung. Okay? किसी एक रंग में आउटपुट हमेशा पैरेलल में होगा. जिस तरीके से हमारे घरों पे सप्लाई, आप नया लैंप लगा लीजिए, नया रेफ्रिजरेटर लगा लीजिए, नया फ्रिज लगा लीजिए, नया एसी लगा लीजिए, नया हीटर लगा लीजिए, all these loads are connected in parallel, not in series. तो जो वोल्टेज आ रही है वो सबको एक सी वोल्टेज मिलेगी. दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. उसी तरीके से पीएलसी में जो लैडर डायग्राम है उसमें आउटपुट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, नॉट इन सीरीज. But yes, input can be series or in parallel, depends on your logic. So that is how it is defined. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Very straightforward. Okay. अब इस पे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में दो किस्म के कॉन्टैक्टर्स आप देख रहे हैं. यू आर सीइंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर्स. एक तो इस तरीके का आप देख रहे हैं, दूसरा आप इस तरीके का देख रहे हैं. ओके. तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका पीएलसी मॉड्यूल है. ये जब ओपन का मतलब होता है कि नॉर्मली नो कॉन्टैक्ट का मतलब नो कॉन्टैक्ट नहीं है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट.
अगर ये डायग्राम है तो इसका मतलब जो आपका कॉन्टैक्टर है ये नॉर्मली ओपन है। इसका मतलब ये जो आपका रिले है, जो आपने इनपुट पे पुश बटन लगाया हुआ, ये जो आप देख रहे हैं इनपुट पे पुश बटन, दिस इज ओपन इन नॉर्मल कंडीशन। आउटपुट पे क्या हो रहा है, आई मीन वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, ओके। बट इनपुट पे नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि इनपुट पे ये टर्मिनल दैट इज नॉर्मली ओपन, ओके। और अगर नॉर्मली ओपन आपको दिखाना है तो उसका सिंबल ये होगा, और सिंबल विल बी दिस, राइट, ओके। उसी तरीके से नाउ यू हैव नॉर्मली क्लोज। तो अगर आपका नॉर्मली क्लोज है ये कॉन्टैक्टर लाइक दिस, इफ दिस इज क्लोज देन यू हैव टू शो दिस, ओके। तो इसमें ये हो सकता है कि नॉर्मली क्लोज हो, आपने फिर जो है वो एनर्जाइज किया तो ये नॉर्मली ओपन हो गया। यानी जब आपने सर्किट को एनर्जाइज किया, फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस हियर नॉर्मली आपका ओपन है, मगर जैसे ही पुश बटन को आपने दबाया, एनर्जाइज किया, तो ये नॉर्मली क्लोज हो गया। मगर जब ये नॉर्मली क्लोज है और जब आपने उसको एनर्जाइज किया तो ये नॉर्मली ओपन हो गया। सो द आई मीन द स्टेट्स विल चेंज डिपेंडिंग ऑन आवर एक्शन एट द इनपुट साइड। तो अगर एनो लिखा हुआ है तो एनो का मतलब ये नॉर्मली ओपन है, यानी जब आपने एनर्जाइज नहीं किया है तो ये ओपन है। और जैसे आपने उसको एनर्जाइज किया, इनपुट सप्लाई आपने दी, सेंसर से कोई सिग्नल आपने दिया, समथिंग कम्स ऑन इट्स टर्मिनल, so it will change it as it said from open to close. Similarly, if it is closed then it will become open. So that is how it will work. Okay, so that is how. तो ये जो दो सिंबल आपको जगह जगह दिखेंगे, उसका मतलब ये है कि अगर ये ओपन है तो इट इज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। एनो लोग कहते हैं एनो कॉन्टैक्ट, एनो नहीं है। एनो का मतलब है नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, राइट। So that is you should understand what is the meaning of these two, क्योंकि ये बार बार आएगा, it will come again and again and again, okay। So now यहाँ तक क्लियर है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। एक मिनट, हाँ गुलशन, हाँ। So let us take one example to understand the things, okay। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें ले जाता है लॉजिक गेट्स का, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सो लेट अस स्टार्ट दिस विद लॉजिक सीक्वेंस। जो हमने गेट्स पढ़े हैं, उन गेट्स को हम लेडर डायग्राम में कैसे शो करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस विद एंड गेट। सो वी विल स्टार्ट दिस विद एंड गेट। you know this is the symbol of AND gate जो आप पढ़ चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दिस इज द प्रोडक्ट इज 1 if A is 1 and B is 1, so their multiplication will come at the output side। अच्छा, अब हम इसमें तीन चीजें लेते हैं इनको शो करने के लिए, दोनों इनपुट को और दोनों आउटपुट को। सो लेट्स से आई टेक पुश बटन। सो दिस इज वन पुश बटन, something like this, and this is another push button, something like this, and then I'll take LED light. This is so I have you know this push button of this color, something, again push button of this color। basically this is a button, push button का मतलब आप इस जगह को प्रेस करेंगे, so it will give the output। and then this is LED of red color, this is your LED lamp। I'm just trying to make you understand that ये चीजें इंडिकेटर है बेसिकली। एक्चुअल तो आपको सर्किट समझना है कैसे। दिस इज आउटपुट, दिस इज red lamp, and these are push buttons। So
if I draw this push button, it will be like this. जब हमने इसको पुश नहीं किया है तो ये नॉर्मली ओपन है. जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा. ओके, दिस कॉन्टैक्ट विल कम हियर एंड इट विल गेट क्लोज. सो हमारी सर्किट वहां पर वो पाथ कंप्लीट हो जाएगा. So keeping this in mind, now we will make ladder logic for AND gate. Okay. तो सबसे पहले आप AND गेट का आप क्या करते हैं, जब गेट बनाते हैं तो आप एक ट्रुथ टेबल लिखते हैं. So you make a truth table. This is A and this is B and this is Y. So this is 0 0 0 0 1 0 1 0 0 and 1 1 1. Okay. ये ट्रूथ टेबल हो गया. एक और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आएगा. ये वाई ही आउटपुट है एंड गेट का. सो बोथ इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज जीरो, देन जीरो, इफ यू मल्टीप्लाई एनी क्वांटिटी विद जीरो यू विल गेट जीरो. सो आउटपुट आपका जीरो होगा. फॉर गेटिंग आउटपुट वन, both the input has to be 1 and then only your output will become unity. अच्छा, हम डिजिटल सर्किट में, आप चूंकि आप लोग ऑनलाइन मोड में हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा. हम डिजिटल लैब जब कराते थे तो उस डिजिटल लैब में हम ये करते थे कि जो भी गेट रियलाइज आप करते तो उस गेट के आउटपुट पर हम एलईडी लगाते थे. तो जैसे ही आउटपुट 1 होगा तो एलईडी को 5 वोल्ट मिल जाएगा एंड एलईडी विल बी टर्न ऑन. जो भी उसका कलर है वो उस कलर में टर्न ऑन हो जाएगा. नॉर्मली रेड कलर का ही होता है लैब में, तो वो रेड लाइट ऑन हो जाएगी. इसका मतलब आउटपुट हाई हो गया. और अगर आउटपुट हाई नहीं हो रहा है तो आउटपुट जीरो है. ओके, तो सेम चीज हम यहाँ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ हाउ टू, अगर आपसे कहा जाए कि पीएलसी में आप गेट लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करिए, देन यू हैव टू मेक लैडर डायग्राम. सो हाउ टू मेक द लैडर डायग्राम, दैट्स व्हाट वी आर trying to understand here. So let me draw this. I'll draw these two power lines. Okay, दो इनपुट है, दो पुश बटन है, दो कॉन्टैक्टर है. So what I need to have one, then I have two, and then third one is, this is the output. So लैम्प को इस तरीके से शो करते हैं मेरे डायग्राम में. So let's say A को हम शो कर रहे हैं. If I show A is connected with push button 1 and B is connected with push button 2, and then output is equal to LED lamp. So what I'll get is, this is my PB1, this is PB2, and this is L. Okay, so what I can say, I can draw in such a way. This is PB1, this is PB2. This is PB1, this is PB2. So once you press the push button, this will close and it will be on. Okay, so this basically is the ladder diagram of AND gate. How it will work? Suppose you are at this stage 0 0.
जीरो जीरो का मतलब है कि दोनों कॉन्टैक्टर ओपन है। जीरो का मतलब इनपुट पे आपने जीरो दिया हुआ है, तो इट इज लाइक बोथ द कॉन्टैक्टर्स आर ओपन, so दोनों पुश बटन को आपने दबाया नहीं है, so this condition is basically a zero zero condition, both are open and the output will, lamp will not glow, it will not give any signal. So now let's say next condition, 01. आप 01 को अगर आप रियलाइज करें, लेट्स कम हियर, so for 01 a is equal to 0, b is equal to 1. So what your diagram will look like, so I have a 0 है, so this is normally open, b 1 है तो ये close हो गया, then this is lamp. So will the lamp glow? The answer is no, because ये सीरीज में है और आपका यही स्विच सिर्फ क्लोज हुआ है and this switch is not closed, so the path is not complete, so output will not glow, so output will remain 0. Okay, हाँ जी, yes, any question? कोई कुछ पूछ रहा है? Should I continue? No, sir. Continue. No, sir. Okay. So that's the case of ladder diagram when a is equal to 0, b is equal to 1. b is equal का मतलब 1 का मतलब ये है कि आपने push button 2 को press कर दिया, so that is closed, but then push button 1 is open, so the output will remain 0. Okay. Now the third condition is I have a is equal to 1 and b is equal to 0. So in that case, what will happen? I have these two conditions, and now what I have done, I have this, then I have this. So now this is closed and this is open. Okay. Still the path is not complete because that is the contactor आपका open है. So what you'll get? You'll not get any output. So the output remains 0. Then coming to the last sequence, here it is. So this is my last sequence, this one. Both the PB1, PB2 are 1. So both the push buttons you have pressed. So once you press both the push button, your lamp will glow. Okay. So this is how, a simple logic gate working is programmed in ladder diagram. तो व्हाट यू विल डू, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब इसका लॉजिक डायग्राम क्या है, तो इसका लैडर डायग्राम तो ये है, दिस इज जनरलाइज्ड लैडर डायग्राम, ये बनाएंगे आप, दिस इज लैडर डायग्राम। फिर इसके ऑपरेशन को आप ट्रुथ टेबल से एनालाइज करेंगे कि साहब ये होगा तो ये होगा, ये तो ये ट्रुथ टेबल रियलाइज तब होगी जब दोनों पुश बटन को हम प्रेस करेंगे, एंड वंस यू पुश बोथ द buttons, then then only the output will glow. So it is very simple if you understood the logic of making this logic diagram. If you fail to understand the logic of making logic diagram, it is very difficult. किसी थर्ड पर्सन को आप अपना ये डायग्राम दिखाइए, लेडर डायग्राम, तो वो तो छोड़ के किनारे हो जाएगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं क्या है। आप चूंकि बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि ये क्या है and what exactly it is, so you'll understand and then you'll analyze it properly. आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। तो ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा अगर आप लॉजिक गेट्स का वो करेंगे, और जैसे आप ऑपरेशन करेंगे, यानी पुश बटन, यहाँ तो हमने पुश बटन मैनुअली दिखाया है, दैट हमने प्रेस किया, बट एक्चुअल सर्किट में हम नहीं प्रेस करेंगे, दैट सिग्नल विल कम फ्रॉम द कंप्रेसर साइड, सॉरी सेंसर साइड। तो वो सेंसर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी आएगा, इफ इट इज हाई, then automatically this contactor will close, and if not comes, then automatically it will get open. Okay, so then the things will be done automated way. So ये हमने समझने के लिए दिखाया कि ये पुश बटन हम दबाएंगे तो ये होगा, but in actual circuit it happens automatically. Right? Is this clear to anybody? I mean everybody? Yes, sir. Yes, sir. Good. So now I am giving you 5 minutes. आप इस 5 मिनट में मुझे नॉट गेट का लैडर डायग्राम बनाइए। It is 12:40.
You have 5 minutes. Make ladder diagram of NOT gate. Yes, sir. यस सर, बन गया. Yes, sir. तो मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ. Now Ridwanul Ansari, can you show it to me? Yes sir. Share your screen and show it to me. Yes sir. Take 1 minute sir. स्क्रीन पे बनाया है? Yes sir. कॉपी दिखाओ. हाँ, कॉपी पे सर. नॉर्मली ओपन. नॉर्मल क्लोज लगा दिया सर. नॉर्मली क्लोज किया है. अच्छा, जी सर. पुश बटन दबाओगे 1 हो जाएगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा. आउटपुट 1 आ जाएगा सर. ओके. अनश खान. Anush Yes, Khan, sir. One second, sir. One second. can you show it? Can you show it, Anush Khan? आपने बनाया है? Okay. Then Mohammad Adnan. Yes sir, yes sir, I'm sure. Show me. Okay. Then I'll call. Okay. Then who else is there? Rohit Pandita is there? चलिए ठीक है. मैं आप लोगों को जिन लोगों ने किया उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा. आई एम स्टॉपिंग. विल डिस्कस मोर थिंग्स टुमारो. ओके. आई गिव अटेंडेंस टू एवरीबॉडी. थैंक यू.